व्हाट इज़ प्रिजर्वेटिव? प्रिजर्वेटिव ड्रग्स के अंदर यूज़ होता है और इस वीडियो में प्रिजर्वेटिव के मतलब डिस्कस होगा कि इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं और किस क्वालिटी का प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल होना चाहिए। डेफिनेशन: Preservatives are substances when added to the final product can improve the shelf life of the product। यानी इसको फूड में या ड्रग में उसको डाला जाता है ताकि ड्रग या फूड को ख़राब होने से बचाया जाए। शेल्फ लाइफ से मुराद ये है कि एक ख़ास मुद्दत तक ड्रग जो है वो इफ़ेक्टिव रहे। They prevent the growth of undesirable microorganisms and changes in the chemical properties of ingredients to avoid the degradation process of the product needed to maintain the shelf life। प्रिजर्वेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंग्रेडिएंट्स के केमिकल चेंजेस को कंट्रोल करता है जिससे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को मेंटेन करने में मदद मिलती है। टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स की अक़साम। प्रिजर्वेटिव इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1 बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ एक्शन एंड नंबर 2 बेस्ड ऑन द ओरिजिनेशन। प्रिजर्वेटिव्स को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1 उसका मेकेनिज़्म क्या है और नंबर 2 उसकी नेचर ऑफ ओरिजिन क्या है। टाइप नंबर 1 बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ एक्शन, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। टाइप नंबर 1 जो है उसको मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट, नंबर 2 एंटी माइक्रोबियल एजेंट and number 3 chelating agent। Number 1 antioxidant, it prevents oxidation, for example vitamin E and vitamin C। ऑक्सीडेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है और उसको अवॉइड करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल होता है। नंबर 2 एंटी माइक्रोबियल एजेंट, इट किल्स or prevents the growth of microbes, for example sodium benzoate, methyl paraben and propyl paraben। Number 3 chelating agent, they make a complex with pharma ingredients to prevent degradation of product, example citric acid, EDTA। ये फार्मा इंग्रेडिएंट्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जिससे डिग्रेडेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव्स इज बेस्ड ऑन द ओरिजिनेशन, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स एंड नंबर 2 आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स। नंबर 1 नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, these are extract from natural resources like plants, minerals and animals, for example neem oil, honey, sodium chloride and lemon। Number 2 artificial preservatives, these preservatives are artificially synthesized through chemicals, for example sorbates, benzoates and nitrites। Selection of preservative, what should be the quality of the preservative? It should be considered during the formulation of the product। A good preservative must have following 6 qualities। Number 1 it must be non-toxic, number 2 antimicrobial agent, number 3 must be chemically stable, number 4 should not change the chemical nature of the drug, number 5 it must produce the desired effect, number 6 it must be effective in a small quantity। जब भी एक ड्रग को बनाने का प्लान हो तो सबसे पहले उसमें उसके लिए प्रिजर्वेटिव का चॉइस करना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा प्रिजर्वेटिव ही एक ड्रग को की जो सेल्फ लाइफ है उसको मेंटेन रख सकता है।